Okay, guys, I see many of you have joined. We can start. Can someone please confirm if my screen is visible? Yes. Yeah. Great. Now look at this, guys. This has discover your servers, right? Now this could have been done using the appliance, which is the normal method. Most of the time we use that method. And once it is done, you will see 100, 200 servers here. And if you want to build a business case, you click here and you give the name, etc. And it will give you. Let's create one very quickly. I will not be using many resources, many let me select US first. Let's say South Central US. It's okay. I was saying I will not be using many parameters here, right? Let's say if I see INR, so it will give you a better idea for you to understand. Now, on what basis it is creating a business case? It is using the input, right? It is using the input which we have given using one of the methods. One is either you import and export the file, or the first one is you uh, download your appliance in their data center, and then it helps you to fetch the data. Based on that data, it is creating. Now, whatever the next option will be seeing, based on that data, it is creating. Now, look at this. It will show us it. It takes some time, right? But it will show you current on premises versus future cost. It will show you, right? If you want to go in Arc, let's not talk about Arc. We are not doing that. It will show you this. It will show you Azure cost. It will ask you some inputs as well. We are not going getting there as well. Okay, license costs, etc. It has done some assumptions. Virtualization software, VMware. Okay, we'll revisit. If it is taking more time, we'll revisit. Okay, so let's revisit here. Next is dependency analysis. Dependency analysis, it's very important. Now, what do you understand by dependency analysis? In your interview also, they may ask you that what are the uh, factors do you consider in dependency analysis? So dependency analysis is where you select 10 servers, right? 10 or 20 servers, and you do the dependency analysis that these are 50 servers example. I'm planning to migrate in the first go. Right? Now it could be server number 1 to 50. But if I do it without dependency analysis, it might happen that the application which is running on server number 2 has some dependency on server number 61, which is there here. Or let's say if I take example from this one, out of these 10 servers, I am migrating server number 1 to 5 first. But if I don't do any dependency analysis, and if I plan कि मैं ऐसे randomly server number 1 से 5 को उठा के पहले migrate कर दूंगा, could be possibility that server number 1 has some dependency on server number 8, but I'm migrating only 1 to 5. तो जब Azure पर चला जाएगा, my application will be broken, it's not working. It's highly possible, बहुत बार होता है, ठीक है? It's highly possible. So to avoid that, we always run a dependency analysis. How the dependency analysis works, it checks your machine for continuous monitoring. Continuous monitoring करके आपके machine को check करता है कि if some processes are running, if this machine is idle, if this machine is working, इस condition में उस condition में this machine is utilizing how many ports, which ports, और कौन कौन से IPs को और कौन कौन से सर्वर से कम्युनिकेशन होता है. This I will be able to show you in some offline session. I'll take it maybe next time or whenever कि dependency analysis exactly दिखता कैसा है. It will look like a net. एक server से it will be a live image sort of thing. You will see your one server और उस server से how many connections are being happen, how many connections are being connected, how many connections are there. वो सब कुछ जो है आपको literally live दिखता है कि आपका ये server it is talking to this server, it is talking to that server. वो सारी चीजें जो है आपको डिटेल में clearly दिखती है. Right? So will be you will be very
confident about transferring or migrating some server, and you can then make groups of server. Now you know कि server number 1 to 5, if I want to transfer or migrate these servers, I have to make sure कि server number 8 is also included here. So now you will make a group of 6 servers और इन सबको एक साथ transfer करोगे. Is it clear, guys? Are you getting it? Yes. So initially we were taking 1 to 5. Then we will include 8 number server as well. So it will be 1 to 5 and then 8. Yes. Look at this. I will show you the actual results, not now, not in the recorded session, but for your understanding, something like this it will look. इस तरह से उसका और बहुत ही बढ़िया से इमेज वगैरह बनता है और मे इट कुड बी लाइक दिस, इट कुड बी लाइक दिस. Look at this. Let's say if this is the server you are planning to migrate, then it will show you this server has dependency on this database, this server has dependency on this server, it has dependency on this AD server, DNS server. जिस भी तरह की जैसे भी dependency होगी, it will show it to you completely. It could be this picture, ऐसा picture, किसी भी तरह का. हर tool का अपना अपना एक अलग GUI होगा. That doesn't matter, but something like this. Okay, at a time, this server is talking to these many servers and these many services. So if you're planning to migrate this server, you should be ready to migrate all of these services, or at least some alternate should be there. Is this clear, guys, to everyone? Yes. Right? वो आपको दिखेगा dependency Yes. analysis में. Assessment, if you want to do the assessment, if you want to uh, let it come. If you want to, let's say, do the assessment of एग्जिस्टिंग सर्वर्स के आप उसको कितना साइज चेंज करके लेना चाहते हो, ये सब करना चाहते हो, यू कैन डू योर मैनुअल असेसमेंट एज वेल. और यहाँ पर आपको एक इससे बना हुआ असेसमेंट भी मिल जाता है. ओवरव्यू. दिस इज द ओवरव्यू. व्हाट डज इट से? 10 मशीन्स इंपॉर्टेंट. असेसमेंट अब तक हमने बनाया नहीं है. फर्स्ट आई वांटेड टू शो यू दिस एंड देन विल कम टू असेसमेंट. लुक एट दिस. ये बिजनेस केस जिसकी हम बात कर रहे थे, हियर इट इज, इट्स रेडी नाउ. और लेट्स क्रिएट असेसमेंट फर्स्ट बिकॉज असेसमेंट में भी टाइम लगेगा. तब तक हम बिजनेस केस देखेंगे. ओके, सो असेसमेंट क्या है? आई एम टॉकिंग अबाउट अज्योर वीएम बिकॉज आई विल बी यूजिंग अज्योर वीएम. ठीक है. असेसमेंट टाइप अज्योर वीएम का मुझको बनाना है. डिस्कवरी सोर्स, एम आई इंपोर्टिंग द सर्वर्स या फिर जो, लुक एट दिस, सर्वर डिस्कवर्ड फ्रॉम अज्योर माइग्रेंस अप्लायंस विच वी डिड नॉट डू. इंपोर्टेड सर्वर्स हमने इंपोर्ट किए. ठीक है. लेट्स डू दैट. गिव अ नेम, टेस्ट असेसमेंट. नाउ गाइस, वन थिंग, इंपोर्ट में तो काफी बार ऐसा होता है ना दैट आपका सिस्टम एडमिन जो है वो भी थोड़ा सा लेजी टाइप होते हैं. 2000 सर्वर है, पूरा इंपोर्ट करके दे देगा एंड दे विल सी नाउ यू लुक एट दिस. ठीक है, इट्स अप टू यू. और अप्लायंस में भी ऐसा होता है, 2000 सर्वर है, पूरे डिस्कवर हो गए. बट डू यू रियली वांट टू असेस ऑल 2000 सर्वर्स एट अ टाइम? नो, यू विल नेवर सी दैट केस. अगर एनवायरनमेंट में 2000 सर्वर्स है, डिस्कवर 2000 सर्वर हो रहे हैं, तो हम माइग्रेशन तो बहुत दूर की बात है, असेसमेंट भी पूरे सर्वर का एक साथ नहीं करेंगे. Right? So we'll do the assessment. Uh, this one, step by step और chunk by chunk. Right? तो ये हुआ आपका फर्स्ट असेसमेंट. लेट्स से इसमें आउट ऑफ 200 सर्वर्स यू कैन टेक 50 सर्वर्स. इन आर केस विल टेक ऑल ऑफ देम. यहाँ पर हार्डली 10 सर्वर्स है, सो इट्स कंप्लीटली फाइन. बट यहाँ पर यू माइट सी मल्टीपल सर्वर्स. अज्योर माइग्रेट का तो लिमिट है 35,000 सर्वर्स बताने का, बट यू विल नॉट टेक ऑल ऑफ देम. डिस्कवर इज समथिंग एल्स, assessment is something else. डिस्कवर, इट इज जस्ट दैट हाउ मेनी सर्वर्स आर देयर जिस एनवायरनमेंट से कनेक्ट हुआ है. असेसमेंट कितने सर्वर्स का आपको करना है, उसके बाद भी माइग्रेशन उनमें से कितने का करना है, दैट विल बी अ डिफरेंट. क्लिक नेक्स्ट, क्रिएट असेसमेंट. इट इज वैलिडेटिंग. while it is being assessed, let it. And this is the assessment I was talking about, guys. आप एक आधे घंटे का भी कर सकते हो and you can do it at least for 1 week. उस तरह से भी आप कर सकते हो. Depends on the nature of the application.
Okay, so let's check the business case first. Sorry. Okay, right here. So we have business cases. Look at this. TCO, total cost of operating. ठीक है, ये आपका इतना पैसे इसमें लगेगा, वॉट एवर दे आर शोइंग, कितना सेविंग होगा. दिस इज फॉर 5 सर्वर. दिस इज एस्टिमेटेड कॉस्ट, एस्टिमेटेड करंट वर्सेस फ्यूचर स्टेट. करंट आपका कितना जा रहा है, फ्यूचर में कितना ये होगा. ठीक है, दिस इज व्हाट यू विल सी हियर. Savings with Azure hybrid benefit. Now, what are hybrid benefit? You don't have to get into that. You're doing migration. We're going to focus here on migration options. ठीक है. Out of these servers, 0% of your IT asset can be decommissioned. Why? Because all of them are being utilized. If in this report they would have found कि किसी सर्वर का 6 महीने से जीरो यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो यहाँ पर रिपोर्ट में आता कि ओके, आउट ऑफ 10 1, या फिर आउट ऑफ 100 10% ऑफ योर आईटी स्टेट कैन बी decommissioned. बट इन दिस केस दैट इज नॉट द केस. हाउ मेनी ओएस डिस्ट्रीब्यूशंस गिवन हियर, कितने विंडोज सर्वर है, कितने लिनक्स सर्वर्स है. इसमें कोई एसक्यूएल वगैरह नहीं है, सो इट इज नॉट शोइंग एनीथिंग. डिस्ट्रीब्यूशन बाय ओएस लाइसेंसिंग सपोर्ट. अगेन ये कौन सा ओएस है, किसका लाइसेंस एक्सपैंड हो सकता है, किसका लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है, वो चीजों को भी यहाँ पर कंसिडर करता है. सो दिस इज योर बिजनेस केस. यहाँ पर जहां पर भी बिजनेस केस आता है, कॉस्ट विल कम इन पिक्चर, राइट. तो यहाँ पर वो आपको थोड़ा सा कॉस्ट वगैरह बता रहा है. नाउ एवरीथिंग हियर इट्स ऑब्वियसली फेक, बिकॉज दीज मशीन्स आर नॉट रियल. वी आर नॉट यूजिंग देम. हमने सिर्फ इनपुट किया है डेटा. बट इमेजिन दैट यू विल गेट द एक्चुअल डेटा हियर, एंड फ्रॉम हियर यू कैन एक्सपोर्ट दिस इन एन एक्सेल फाइल. उसमें थोड़ा सा और अपना कंपनी का ब्रांडिंग वगैरह लगाते हो आप, एंड देन यू ऐड दैट टू वन पीपीटी, एंड देन यू, आई मीन, यू विल सेंड इट टू योर आर्किटेक्ट टीम. योर आर्किटेक्ट टीम विल डू दैट. उसमें 2 4 वीडियो डायग्राम्स वगैरह वो सब ऐड करके यू प्रेजेंट अ बिजनेस केस टू योर client. Okay, based on our analysis, based on our assessment which we have started in your environment, this is what we have thought of, or this is what we have concluded. This is what we suggest. इस तरह से होगा आपका ये बिजनेस केस का एनालिसिस. Is this clear, guys? Any doubts? Any questions? As of now, all good. Okay. Then assessment, hopefully it is ready by now. So test assessment, which we started. Somehow similar cheese from a different purview, but it will give you more options as well. Azure readiness. What does it mean? How many of the servers are ready? Here you can relate those 6R wala concept which I shared with you guys last week. जो मैंने explain किया, I asked you to read about it, right? If your machines are not ready, can you do lift and shift directly? No. No, right? Rehosting हो सकता है, maybe some tweaks and twists are possible required, right? Monthly cost. This is in USD. We can change that, but it's okay, right? Storage पे कितना आप cost ये करोगे monthly? Operating system distribution, right? Distribution by Windows version. Now look at this. यहाँ पर सारे servers 2016 के हैं, but if you had 2019, 22, 2008, 2003, वो भी आपको बताता था कि यार ये जो है सर्वर्स आपके एक्सपायर होने वाले हैं, आउट ऑफ सपोर्ट होने वाले हैं. फॉर एग्जांपल 2K12 थोड़े दिन में आउट ऑफ सपोर्ट हो जाएगा, एक्सटेंडेड सपोर्ट मिलेगा. 2K8, 2K3 ऑलरेडी आउट ऑफ सपोर्ट है. सो you'll get all of these details also. पोटेंशियल सेविंग, कितना सेव कर रहे हो आप विंडोज पे, आप यू आर गोइंग टू सेव दिस मच, दिस इज इन यूएसडी, एंड फॉर लिनक्स यू आर सेइंग दिस मच. ठीक है, दिस इज योर assessment. Cost details, if you want, you can see here separately. एक एक मशीन का भी आप देख सकते हो. लुक एट दिस, क्या दिस मशीन, this is what it is going to cost you. This machine, this is what it is going to cost you. Right? ये मशीन इतना कॉस्ट करेगा. Readiness we have already seen. So this is how you see your assessment, guys. If it is not ready, look at this. If it is not ready, why is it not ready? वो भी बताएगा आपको कि क्या इसमें करने की जरूरत पड़ेगी. इसका OS अपग्रेड कर दो, इसका सर्विस पैक अपग्रेड कर दो, whatever it is. Right?
it will do that as well. You can simply export all of these pages and you can show this to your client. As in, not you, your architect team will do that. Okay, is this clear? And this is the group I was talking about. You can create groups as well. I have created all of them in same group. We have dummy server, so it's okay. Is this clear, guys, to everyone? Azure assessment? From Any whom we doubts? can get the details of assessment period? One Sorry, day, week, 6 months. From where we can get the details for the we did cover this, right, assessment Sunil? from? In last, were you not there in Yeah, last but session? yeah, I So was you there. you as an administrator definitely not get. You don't get to decide. You won't get to decide. Yeah, It completely depends on the nature of the application. किस तरह का एप्लीकेशन है, उस पर ट्रैफिक कब आता है, वीकेंड पे आता है, मंथ एंड पे आता है, मंडे टू फ्राइडे ज्यादा होता है. ऑल दिस डिस्कशन योर आर्किटेक्ट टीम विल डू इट with yeah, the you got it. application owner. Remember? Yeah, So you won't have to worry about it. You will finally get a number, and whatever sort of request you get could be email, low level diagram, Teams meeting, uh, if you're using some Jira board, whatever you're using, जहां से भी आपको रिक्वेस्ट आता है वहां पर आपको ये बता दिया जाएगा एग्जैक्टली कि कितने दिन के लिए कौन से एप्लीकेशन को असेस करना है. okay, okay. Yes, guys. Any doubts? Any questions? Yes, Prabhat, do you have any question? No, no. Okay. Fine. So if there are no questions, guys, let's go ahead and check Azure Migrate. Let's say your assessment has been done. Whatever you had to do, you have done it. Whatever your architect team wanted to do, they have done it. Now you guys have decided, let's go ahead and migrate these servers. Similarly, one thing, guys, it's not impossible to migrate your servers without assessment. It's not a technical dependency. Understand? It's a business requirement, business dependency. Technically, यू डोंट असेस जीरो सर्वर और फिर भी आप माइग्रेट कर दो, जो एरर आना है आ जाएगा, जितने माइग्रेट होने हो जाएंगे. बट यू विल नेवर सी दैट हैपनिंग, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू टेक्निकल रिक्वायरमेंट नहीं है वो. सो लेट्स स्टार्ट माइग्रेशन. अगेन इन माइग्रेशन ऑल्सो यू कैन डिस्कवर, you can replicate, and you can migrate. So let's start. Click on discover. It will ask the same thing, that where do you want to migrate your machine? Is it going to Azure Stack HCI? It's a different topic altogether. Leave it. Azure VM. Right? Are your machines virtualized? Yes, they are. Where are they? vCenter, Hyper-V, GCP, AWS. So it's on Hyper-V. Target region. This is important now. राइट, कि आप कहाँ पर इसको ले जा रहे हो, कहाँ पर आप जो है इसको ये करने वाले हो. टारगेट रीजन आपका क्या होने वाला है. So it's very important you should be ready with your target region. In this case we have already prepared something. I'll tell you why it is important. कि आपने आपका डिसाइड नहीं किया, कहीं पर भी बना लिया है, और बाद में जो है इसके जो प्री रिक्विजिट है लैंडिंग जोन वो आपने किसी और रीजन में बनाया, सो यू विल नॉट बी एबल टू डू इट. सो हियर आई हैव प्रिपेयर्ड सम वर्चुअल नेटवर्क एक्सेट्रा इन ईस्ट यूएस. सो वी आर डिसाइडिंग कि हमको ईस्ट यूएस में ही जाना है. राइट, सो माय टारगेट रीजन इज ईस्ट यूएस. Confirm that the target region for migration is East US. Fine. Create resources. While this is being done, any questions? This won't take much time though. Still, if you guys have any doubts, any questions, please do ask. So no, once they are migrated, then they can be divided into groups or resource group. No, no. I mean, yes, they can be, but you will never see that is happening. It's not a good idea to keep moving your machines. बिल्कुल भी नहीं करेंगे ऐसे. At the time of migration itself, we will decide कि कौन सा resource group में जाना है, कौन सा VNet पे जाना है. In fact, इससे बहुत सारी चीजें पहले ही कर देते हैं. दैट इज व्हाट द लैंडिंग जोन सेटअप इज. लैंडिंग जोन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट इन नटशेल, दो आई हैव कवर्ड इट इन आवर प्रीवियस सेशन इन डिटेल. लैंडिंग जोन आने से पहले, आई मीन बिफोर यू मूव योर मशीन,
You should know your region, you should know your subscription, you should know your resource group, you should know your virtual network and subnet. ये decided होना चाहिए. You should not be doing कि यार बाद में करते हैं. It will never work. This is the reason, Prabhat, it takes a lot of time, right? You are under impression के 200 मशीन 2 हफ्ते में हो जाएंगे. What will we do after that? नहीं होता है. Trust me, 1 हफ्ते में 5 मशीन ही होगी. And that too with 2 resources, I'm saying. 2 माइग्रेशन इंजीनियर लगा कर रखेगा ना, तो 1 हफ्ते में 5 मशीन माइग्रेट होगी मैक्सिमम. बहुत अच्छे रिसोर्सेज है. एवरीथिंग इज स्मूथ. आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना स्मूथ है. चेंज मैनेजमेंट भी उतना स्मूथ है. क्लाइंट भी उतना फ्लेक्सिबल है. सब कुछ है. तो 8 मशीन 10 मशीन, उससे ज्यादा कभी नहीं होता है. बहुत सारे एरर्स आते हैं. इट्स अ ह्यूज प्रोसेस. सो इतना जल्दी नहीं होता है. एंड इन माइग्रेशन पीपल टेक देयर ओन टाइम. स्वीट टाइम. हर एक के लिए हर एक नया रिसोर्स ग्रुप बनाना पड़ता है. दे विल क्रिएट इट, वीनेट, दे विल क्रिएट इट. सब कुछ होगा. इसलिए यू विल नेवर सी कि 200 मशीन से एक साथ हम पहले माइग्रेट कर लेंगे एंड देन विल स्टार्ट सेग्रीगेटिंग देम. वो सब नहीं होता है. राइट. सो every technically possible to answer your question, but you will never see that happening. Got it? Yes. Right. Now look at this. What does it say? That fine, you want to migrate to Azure VM. Your machines are coming from Hyper-V, right? Do you want to install the new replication appliance or scale out an existing? If I already had an appliance, तो मैं उसको use कर लेता. But did we have any appliance? एक कोई appliance install किया है क्या हमने? At the time of assessment, Not did right we? now. Right. So let's install a new appliance. In this case, we are going to do that. अब हम इसके appliance को install करने वाले हैं. ठीक है? Because this one is not a resource hungry appliance. ये छोटा सा है. Right? Now, this is happening on, again, this is happening on your machine. Right? This is happening on Azure administrator's machine. But what will happen, अब यहाँ पर डाउनलोड करने के बाद मुझको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा. राइट. सो टू अवॉइड दैट कॉपी पेस्ट, व्हाट एम आई डूइंग? मैं जाके मेरे फिजिकल सर्वर पे ही करता हूँ इसको. एक्चुअली, आर यू गेटिंग इट व्हाट एम आई ट्राइंग टू से? एक्चुअल एनवायरनमेंट में ये कहाँ पर होगा? ये आपके मशीन पर ही होगा. Azure एडमिनिस्ट्रेटर के मशीन पर ही होगा. राइट. You will install that, you will download that appliance, you will share it in some folder, और वो कॉपी वगैरह करके वहां पर इंस्टॉल करने लगेगा, वहां पर इसको एग्जीक्यूट करेगा. बट टू Is सेव it टाइम, टू सेव सम टाइम, व्हाट एम आई डूइंग? मेरा जो फिजिकल सर्वर है ना, उस पर मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ. दे विल नॉट बी एबल टू डू इट. व्हाई? बिकॉज उनके सिस्टम एडमिन के पास आपके अज्योर के रिक्वायरमेंट तो नहीं होने वाले. आपके अज्योर के ये तो नहीं होगे. आर यू गेटिंग द पॉइंट गाइस? Yes, and the appliance file that we are going to download, where we are going to save it in our physical machine that you're using right now. That's what you said, यू right? यू विल सेव इट. मोस्ट ऑफ द टाइम जब माइग्रेशन का कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है ना, सो यू विल गेट, ये सब मिल जाता है कि ये जो है शेयर फोल्डर और शेयर पॉइंट वी आर गोइंग टू यूज फॉर कंप्लीट माइग्रेशन प्रोजेक्ट. यहाँ पर आपको चीजें सेव करनी, यहाँ पर दोनों टीम को एक्सेस होगा. ये सारी चीजें पहले डिसाइड हो जाती है. योर आर्किटेक्ट टीम विल डू दैट. वो सब डिसाइडेड होता है. यू विल गेट द पाथ कि ठीक है भाई, आपके पास ये आ गया. इस अप्लायंस को यहाँ पर आपको ये करना है, इंस्टॉल करना है. यहाँ पर इसको डाउनलोड करना है. इंस्टॉलेशन वाली टीम वहां से पिक कर लेगी जिस भी सर्वर पे उनको जहां पर भी जाना है. दे विल डू इट. Acha, the script will be ready and then just we have to follow it, right? There's no script in this. Acha, okay. You are literally downloading it. Imagine that this is happening. What you are seeing now, ये होने वाला है आपकी मशीन पर. ठीक है. So you will click on discover. आपकी मशीन पर as an administrator, whatever your workstation, you guys are doing this. Select this. Select this. You will have this information. Appliance type. Install a replication appliance. Install and scale out. ठीक है. This is fine. We don't have to worry about it. ठीक है. Here it is. इस पेज पे थे हम लोग वहां पर. एंड समटाइम्स इन वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स वी हैव सीन कि वो शेयर पॉइंट में कुछ इशू चल रहा था ना. सो व्हाट दे डिड, इट वाज अ गुड आइडिया एंड इट कैन हैपन, उसमें भी कोई इशू नहीं है. यू कनेक्ट टू द सिस्टम एडमिन, टीम्स पे कनेक्ट कर लो, स्क्रीन शेयर कर लो, और उनके सिस्टम में डायरेक्टली आपके पोर्टल से लॉगिन करके वहीं पर डाउनलोड करके दे दो उसको. अल्टीमेट एम इज यू हैव टू गिव दिस फाइल टू हिम so he can install it in their environment. Simple. Is this So that clear, we ये have guys, to फाइल everyone? टीम को
इस फाइल को टीम्स पर ही भेज दो उसको। टीम्स पे डेफिनेटली नहीं जाएगा, थोड़ा यूज फाइल होता है, और हाउएवर यू लाइक इट। अगर इफ योर टीम इज सपोर्टिंग दैट, इट्स ओके। अल्टीमेट एम इज ये फाइल आप डाउनलोड कर पाओगे, व्हाई? बिकॉज यू आर क्लाउड एडमिन, एंड ये फाइल वो इंस्टॉल कर पाएंगे, व्हाई? बिकॉज दे आर सिस्टम एडमिन। Okay. अब बीच का प्रोसेस हर यस। कंपनी का अपना अपना हो सकता है। मे बी यू आर वर्किंग ऑन साइट, आप क्लाइंट के डेटा सेंटर में जाकर काम कर रहे हो, और उसने आपको एक मशीन दे दी लॉगिन करके, यार भाई यहीं पर ब्राउजर में लॉगिन करो, डू इट। वो भी होता है। So that doesn't matter. How is it happening? It doesn't matter. What you have to do, that is the key thing. Right? So prepare a Hyper-V host server. Because we have selected Hyper-V. ये Hyper-V की जगह अगर यहाँ पर मैं vSphere करता तो vSphere host server आता. But we are doing Hyper-V. ठीक है? So ये मैंने डाउनलोड कर लिया यहाँ पर. Okay, look at this. It's not big file. 53 MB की है. ठीक है? So I could have done that, but still I am okay कि मैं यहीं पर डाउनलोड करूं, यहीं से एग्जीक्यूट करूं. Now this file you will copy and share it in the share folder, SharePoint, email if it supports. Normally कोई email नहीं support करेगा इतना बड़ा. Teams if you say so, however you want. या आप इसको कॉपी करके पेन ड्राइव में देकर आ जाओ. It doesn't matter. ठीक है? Ultimately this file should be there in their environment and they should be able to run it. But सिर्फ ये फाइल इंस्टॉल करने से कुछ होगा नहीं. ये फाइल इंस्टॉल करते वक्त आपको इनपुट्स भी तो देना होगा कि आपका माइग्रेट प्रोजेक्ट कहां पर बना है. राइट? आर यू गेटिंग इट गाइस? ये फाइल कहां पर इंस्टॉल होने वाली है? लुक एट दिस फाइल इज बीइंग इंस्टॉल्ड ऑन दिस फिजिकल सर्वर. राइट? सो ये सर्वर को पता होना चाहिए कि आपका अज्योर सब्सक्रिप्शन कौन सा है, आपका अज्योर प्रोजेक्ट कहां पर बना है, इसको कनेक्ट किससे करना है. वो सारी इंफॉर्मेशन यू विल हैव टू पुट व्हाइल डाउनलोडिंग दिस. So instead of doing that manually, Azure has given us a registration key file. So you download this as well. Now look at this. So you give this file and this file. ये दोनों उनको आप दे दोगे. While installing, your system admin is going to use this file. और उससे क्या होगा? ये सारी information जो है अपने आप वहां पर fetch हो जाएगी. So let me do it for you. But before I start installing, do you guys have any questions, any doubts? Yes, guys. Yes, no, maybe. What am I doing here? मैंने सारे information input कर दी, डाउनलोड कर लिया होस्ट को. मी एज इन दिस इज योर जॉब, अज्योर एडमिनिस्ट्रेटर, माइग्रेशन इंजीनियर, प्लेटफॉर्म इंजीनियर, वॉट एवर यू कॉल इट, दिस इज योर जॉब. यू आर डूइंग इट. आपने डाउनलोड कर लिया, एक की भी डाउनलोड कर ली ताकि आपके इस सब्सक्रिप्शन वगैरह की इंफॉर्मेशन उसमें रहे. आई डोंट सी एनीथिंग कनेक्टेड नाउ. व्हाई? बिकॉज माई सिस्टम एडमिन हैज नॉट इंस्टॉल्ड. मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, सिस्टम एडमिन को दे दी चीजें. नाउ योर सिस्टम एडमिन इज trying to install this. So double click. Is guys any doubts, any questions? किसी के माइंड में कुछ डाउट्स वगैरह क्वेश्चंस है, so please do ask. I think it didn't work. Let's try as an administrator. Okay, it's already running. Sorry. So let's wait for it to appear. Meanwhile, if you have any questions, please do ask. Look at this. What is it saying? Uh, Microsoft security import, etc., etc. It's just giving the brief introduction, etc. Do you want to update it? Yes, we always do this. As of now, I'm not going to do that because just मैंने अभी तो download किया, I know it's updated, and even if it is outdated, थोड़ा बहुत I am okay with it. Production environment में you will always go ahead with the update. Okay, so I'm going with no. Click OK. Now, what is it saying? Specify where you want to install the recovery provider, etc. This could be uh, C drive वगैरह जो भी हो सकता है आपका. It's okay. ये सब सिस्टम एडमिन कर रहा है आपका. ठीक है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. ये जो इंस्टॉलेशन हो रहा है ये फिजिकल सर्वर पे हो रहा है या वर्चुअलाइजर पे हो रहा है? फिजिकल Physical सर्वर पे server. होता है. फिजिकल सर्वर पे जहां पर आपका हाइपर वी है. अंडरस्टैंड वन थिंग, हाइपर वी हमेशा किसी न किसी फिजिकल सर्वर पे ही होगा. इट कुड बी एन ओएस बेस्ड फिजिकल सर्वर या बेयर मेटल फिजिकल सर्वर. लेकिन हाइपर वी को चलने के लिए एक फिजिकल सर्वर चाहिए.
Got it? So this is Yes. happening on your server. This is not happening on those machines जो migrate होने वाली है वो नहीं. Sorry. Okay, it's not happening on those machines. ये machine जो है, let's say this machine in Windows वाला machine, this is going to hang a lot, guys, because इसमें काफी कम resources है machine में, and I'm utilizing it a lot. So understand, ये जो machines है ना, इनमें से किसी पे कुछ नहीं होगा. इनके पैरेलल एक और सिस्टम इंस्टॉल हो रहा है. सिमिलरली जैसे असेसमेंट में हो रहा था ना, वैसे ही, बस असेसमेंट वाला मशीन बहुत बड़ा था, 12 GB का, सो वी कुड नॉट डू इट. ये एक मशीन नहीं है, छोटा सा अप्लायंस होगा, दिखेगा भी नहीं यहाँ पर, बट इट विल गेट इंस्टॉल्ड. ठीक है, तो इट्स नॉट हैपनिंग ऑन दोस टू मशीन्स. जो माइग्रेट होने वाली उन मशीन पे अब तक कुछ नहीं हो रहा है. So it has been done. Okay. Continue to register the server in Azure Site Recovery Vault. Because see, आपने इसको इंस्टॉल तो कर लिया, बट अब तक इस सर्वर को ये पता नहीं है ना कि आपके Azure पोर्टल पे आपका सब्सक्रिप्शन कौन सा है, वॉल्ट नेम क्या है, एटसेट्रा. सो दैट इंफॉर्मेशन यू कैन फिल हियर, बट इट कैन नॉट बी डन मैन्युअली. हेंस आपने इनको एक फाइल दी थी. इफ यू रिमेंबर, वी डाउनलोडेड वन मोर फाइल विच इज दिस वन. लुक एट दिस. ये आपके Azure Migrate प्रोजेक्ट से आया है, इसलिए इसका नाम देखो वैसे ही. द मोमेंट आई असाइन दिस, it has already taken the key file, it has taken the subscription name, vault name, सब कुछ ले लिया. Click next. Okay, this is important part. We are not going to do this one. We are going ahead with this option, but let me explain it to you. Most of the time you will see it. Technical इसमें आपको बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, because this will again be done by your system admin, right? What is it? But what is it saying? Connect directly to Azure Site Recovery without a proxy server. मतलब कि जो है ना, डायरेक्ट कनेक्शन कर दूं मैं इसका, इस सर्वर का और मेरे Azure का डायरेक्ट कनेक्शन. The another method is connect to Azure using a proxy server. I hope all of you understand what is a proxy server. A proxy server, it's जो आपका डेटा भेजना है, तो वो थोड़ा सा रीराउट करके देगा. Instead of I give you directly something, I send it via someone, right? Let's say I have to hand over you a pen drive. डेटा वाला कोई पेन ड्राइव देना है, बट आई डाउट के यार, नहीं, आई डोंट वांट टू बी सीन, मैं नहीं चाहता कि पता चले मैंने दिया है. सो आई विल हायर समवन, कोई प्रोफेशनल सर्विस, और आई गिव इट टू सम फ्रेंड कि यार ये उसको देकर आ जाना. डेटा सेम है, सब कुछ सेम है, बट आई एम नॉट कमिंग इन लाइट. मैं पीछे कहीं खड़ा हूं, मैंने बस किसी को ये कर दिया. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड प्रॉक्सी. प्रॉक्सी अटेंडेंस आपको पता होगा. सिमिलरली प्रॉक्सी सर्वर, हाउ टू कॉन्फ़िगर प्रॉक्सी सर्वर, उस प्रॉक्सी सर्वर का एड्रेस क्या होगा, पोर्ट क्या होगा, ये वैसे भी आप लोग नहीं कर पाओगे, बिकॉज इट इज देयर इन देयर ऑन प्रीम एनवायरमेंट. सो इट इज बियॉन्ड योर कंट्रोल. यू जस्ट हैव टू टेल देम कि अगर आपको प्रॉक्सी सर्वर करना है, यूज दिस ऑप्शन. डायरेक्ट करना है, यूज. बट यू विल सी मोस्ट ऑफ द टाइम दे यूज प्रॉक्सी सर्वर. नो वन वांट टू शेयर देयर एक्चुअल सर्वर्स आईपी एड्रेस, बट इन दिस केस आई एम ओके विद इट. ठीक है. सो बट प्रॉक्सी सर्वर की इंफॉर्मेशन कौन फिल करेगा, वही करेंगे. व्हाई, वेयर इज इट हैपनिंग, व्हाई विल दे डू इट? क्योंकि अब पूरा सेटिंग उनके एनवायरनमेंट में हो रहा है, राइट? यू आर नॉट देयर सिस्टम एडमिन, आपको एक्सेस भी नहीं होगा शायद. गेटिंग इट गाइस? यस, नो, मे बी, एनी डाउट? Guys, can you hear me? Please respond. हो रहा है, थोड़ा धीरे Yes, धीरे sir. आ Okay, रहा है. great. Fine. So select next. It is fetching the details, some certificates, registrations. Once I get the finish button, I'll click on finish and then we'll go back to our portal. System admin को इतना ही काम करना है आपके. That's it. Next job इसके बाद होगा पोर्टल पे सब कुछ. Meanwhile मैं फिर से वो वेबसाइट्स को ओपन करके रखता हूँ. Okay, this server is working fine. Look at this. These are my private IPs, guys. ठीक है, मैं बस privately access कर पा रहा हूँ इन वेबसाइट्स को, just to check कि हाँ दोनों काम कर रहे हैं. So yes, they are working. It is still recovering this. Just for your information, meanwhile, if I open services,
सो यू विल सी कुछ न्यू सर्विसेज जो है ना यहाँ पर इंस्टॉल हो गई होगी. Migrate services, I'll share the exact names with you, or maybe once that is done तब शायद होगी. Let's say most of the time if you are facing some errors etc, आपको आके इन सर्विस को रीबूट करना होता है कई बार. So if they say कि यार ट्रबल शूटिंग क्या किया आपने while doing the migration, कोई सर्वर ये नहीं हो रहा था, तो कैसे ट्रबल शूट करते थे, what are the services related to Azure Migrate. So you will have to talk about these services. And sometimes again as I told you, it's not necessary कि आपके पास सारा एक्सेस होगा. Maybe your system admin team, they will do it, but you should at least know, right? They will not come and एक एक सर्विस को नहीं छानते बैठेंगे वो लोग कि भाई क्या क्या जो है ना सर्विसेज यहाँ पर है. You will have to tell them कि please look at these services. Got it? So it is working. It might take some time. Only 3 minutes are pending in this one, guys. In this session, we'll take a break because इसके बाद कुछ होना है तो replication होगा अपने आप. Right? So we'll take एक 10 minutes का break लेते हैं. We'll wait 10 minutes में वैसे भी replication नहीं होगा, but at least थोड़ा सा इसमें ये हो जाएगा. I want to finish this today. और नहीं भी होता तो let's do it tomorrow as well. That's okay, completely fine. Depends on the replication. अगर replication होता है, then only we will be able to migrate. अगर replication नहीं होता है तो we will not be able to migrate. Right? I hope you understand कि माइग्रेशन में बैकएंड में क्या यूज होता है एग्जैक्टली. योर एएसआर राइट. एएसआर क्या होता है आपके साइट रिकवरी, जिसमें रेप्लिकेशन होता है. तो यहाँ पर ही आपकी मशीन रेप्लिकेट हो रही है. ओके, सर्वर वॉज रजिस्टर एंड इट्स डन. क्लिक ऑन फिनिश. नाउ योर सिस्टम एडमिन्स जॉब हैज डन. Now it is your turn. This is the place from where you have downloaded. Do you see anything connected here? No. What you have to do is simply just refresh once. थोड़ा सा यहाँ पर आके चेक कर लो. Okay, can you see? It shows one server is connected. It was zero earlier. Can you see Yeah. this, guys? One is connected. What does it mean? इसका ये मतलब है कि आप मल्टीपल भी कर सकते हो. लेट्स से बहुत ही बड़ा एनवायरनमेंट है और बहुत छोटा भी एनवायरनमेंट है, बट देयर आर टू डेटा सेंटर्स, वन क्लाइंट हु हैज टू डेटा सेंटर्स एंड ही वांट्स, कोई कनेक्टिविटी नहीं है बीच में, ही वांट्स आप दोनों को अलग अलग कर लो. यू कैन डू टू एट अ टाइम एज वेल. एक Azure Migrate प्रोजेक्ट में आप दो तीन मल्टीपल भी कर सकते हो. हियर यू विल सी टू कनेक्टेड, थ्री कनेक्टेड. ठीक है, बट इट इज नॉट फाइनलाइज्ड येट. यू हैव टू क्लिक, यू हैव द लास्ट से. इन्होंने तो इंस्टॉल कर दिया, आपको ईमेल भेज दिया, ओके वी हैव इंस्टॉल, इन्होंने वो स्क्रीनशॉट भी आपको भेज दिया जो फाइनल दिख रहा था. नाउ यू विल कम हियर एंड क्लिक ऑन finalize the registration. Now look at this. What does it say? Start replicating virtual machines. It will start replicating the virtual machines. Finalizing registration and completing virtual machine discovery takes 10 to 15 minutes. You can start replicating after 15 minutes. तो 15 मिनट्स में आपका रेप्लिकेशन नहीं होता है, ठीक है. 10-15 मिनट्स तो इसको डिस्कवर करने में लग जाएंगे. 10-15 मिनट्स इसको लग जाएंगे मशीन्स का रेप्लिकेशन स्टार्ट करने में, इनिशिएट करने में. The replicating the whole machine, it is going to take a lot of time, right? Still, we'll take a break and I'll see you guys at 4:30 using the same link. Hopefully by that time it will be available here. Replication nahi hoga, we'll see something else, and I think migration will do tomorrow. Okay guys, I'm stopping the session. We'll connect in 10 minutes, 4:30 sharp.